Hello, all the students. Welcome once again. My name is Anil Chaudhary, and today, students, we are going to have our first introduction to grammar. तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ग्रामर पढ़ने में मज़ा आता है। मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता रहता हूँ एंड जनरली स्टूडेंट से कि सर ग्रामर बड़ी बोरिंग है एंड स्कूल में भी सर बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया था, बट आई वाउच इस वीडियो से स्टूडेंट्स अगर आप ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंटरेस्ट आएगा एंड पॉसिबली जितने एमबी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, लेट इट बी स्नैप, एनमैट, ज़ैट, सीमैट, इन सब में स्टूडेंट्स यू सी द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ग्रामर एंड पॉसिबली स्टूडेंट्स ये जितने क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। एक बार ग्रामर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करो, आई वाउच इन सब एग्जाम्स के क्वेश्चंस को क्रैक करना विल बिकम ईजी फॉर यू। एट द सेम टाइम जितनी भी बीबी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, आईपी मैथ, स्पेशली CUET if I talk about, and then students if I talk about the various competitive exams like bank and SSC, इन सब में ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो से अपनी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को स्टार्ट करोगे तो मुझे लगता है कि जो बेस तैयार होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। एंड स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो आई विल नॉट बी डायरेक्टली स्टार्टिंग विथ आइडेंटिफाइंग द एरर्स इन द सेंटेंसेस। व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना स्टार्ट करेंगे। We will try to develop a very good understanding on the various parts of speech. By the way, can you people tell me how many parts of speech are there? How many? 7, 6, 8? Yes, there are 8 parts of speech. तो ये जो 8 parts of speech है, सबसे पहले तो इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। And in today's class, we are going to understand them. After that, we are going to take 10 questions also, where possibly some sentences are given to us and one particular word has been underlined. Our job is to find out that particular word belongs to which part of speech. तो आज की जो पूरी क्लास है स्टूडेंट्स, हमारा एक ही चीज़ पर फोकस होगा, तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। और एक बार स्टूडेंट्स अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया, बिलीव मी ग्रामर विल बिकम अ केक वॉक फॉर यू। तो सबसे पहले तो वी नीड टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। English में students do understand the thousands of words which are there. All these thousands of words, they belong to one out of these 8 categories. And when I talk about the parts of speech, हमें पता है students, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, interjection and preposition. So these are the 8 parts of speech. But we will try to understand the definitions of these 8. We will try to understand कि किस तरह से the questions may confuse you. तो start करते हैं। तो यस, वापस से बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ प्रॉपरली टेबल और चेयर पर, और इस पूरी क्लास को सीरियसली ओके बिल्कुल एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन के साथ अपन अटेंड करना स्टार्ट करें। एंड यू पीपल डू अंडरस्टैंड, फेक इट ओके बिफोर यू मेक इट। तो ये जो दिमाग में बैठा हुआ है ना कि ग्रामर बड़ा बोरिंग होता है, समझ में नहीं आता है, उसे स्टूडेंट्स निकाल दो एंड सोचना स्टार्ट करो कि सर ग्रामर इज इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में और इसके क्वेश्चन 100% मैं सॉल्व कर पाऊंगा। और वैसे भी स्टूडेंट्स एक बार कॉन्फिडेंस आ गया किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, क्या आई बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस वेल, आई बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर्स, आई बिलीव दैट उसके बाद उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले वी पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड उसके पहले ओके एनीवे ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, यू पीपल आर सपोज टू फाइंड आउट द नाउन फॉर्म ऑफ जो, पर इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा उसके पहले कुछ बहुत बेसिक चीज़ों पर अपन चलते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यू पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस ओके और अ क्लॉज। ओके सबसे पहले लेट मी आस्क वन क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस और एंड अ क्लॉज। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ क्लॉज। वैसे काफ़ी हद तक ये दोनों वन एंड द सेम होता है। अगर मैं किसी भी क्लॉज को सेंटेंस कहता हूँ या किसी भी सेंटेंस को क्लॉज कहता हूँ चलेगा, बट फिर भी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दैट बिकम्स योर फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ द डे। नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट इज अ क्लॉज। वैसे कई बार मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूँ तो दे से सर एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिकम्स अ सेंटेंस, बट यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड any group of words that actually does not make a sentence. Okay, what is more important is whenever you make a sentence, there has to be a combination of a subject and a verb. I repeat, whenever students, you people make a sentence, there has to be a combination of a subject and a verb. तो जब तक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता तब तक स्टूडेंट्स वो कभी भी सेंटेंस या क्लॉज नहीं बनता है।
Now you people will have to understand what is a subject. सबसे पहले let us take a very simple example and I believe that पूरे इंडिया में ग्रामर पॉसिबली इसी सेंटेंस से ओके स्टार्ट होती है, रामा किल्ड रावणा। चलो अब इस पूरे सेंटेंस को अपन थोड़ा सा समझें। पॉसिबली जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको आती भी होगी, बट मैं एक बार ये पूरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस, उसके बाद जो क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, यू विल बी इन अ बेटर कंडीशन टू गिव द आंसर। और जब भी मैं किसी क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, माई फोकस इज नॉट ओनली ऑन गिविंग द आंसर, बट उसके साथ हम अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कीप डिस्कसिंग। ओके, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ पेशेंस पूरा रखो। इंग्लिश को स्टूडेंट्स अगर सीखना है तो बिना पेशेंस के यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इट। Now when I say this, when I take this sentence, Rama killed Ravana. Now this sentence can be divided into two parts. Okay, Rama, it becomes the subject. Okay, and this part is known as predicate. So first of all the students understand, किसी भी सेंटेंस को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। So one becomes the subject and the second part, the rest of the part is known as the predicate. And अगर मैं further डिवाइड करूं, तो yes, Rama becomes a noun. Okay, and what is killed? Killed becomes a verb. Okay, possibly you people might be knowing this. Verb किसको कहते हैं? Where there is an action, and possibly where there is a state of being. तो verbs भी students multiple types के होते हैं। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आज के इस क्लास में भी दूंगा। So Rama becomes the subject, and you people try to understand who is the subject. Subject is the person who is main doer of the action. किसी कार्य को करने वाला, so that person is known as the subject. The doer of the action is known as the subject. या possibly वो पूरा सेंटेंस जिसके बारे में बात करता है उसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। पूरा सेंटेंस जिसके बारे में बात करता है, so that is known as the subject. So when I say Rama killed Ravana, the doer of the action is Rama. So Rama becomes the subject here. Now killed becomes the action, it is the verb, and Ravana, it actually becomes the object here. और यूं देखूं तो even Ravana becomes a noun because that is name of a person. Now you people understand, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एंड डू अंडरस्टैंड जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है वो हमेशा या तो एक नाउन होगा या पॉसिबली एक प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड ओके, एंड व्हाट इज अ नाउन? यस, इट रेफर्स टू नेम ऑफ समथिंग, एंड प्रोनाउन अपन किसे कहते हैं? दीज आर द वर्ड्स व्हिच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स। एनीवे, इन डेफिनेशन को स्टूडेंट्स अपन थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, बट सबसे पहले यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्लासिफिकेशन। So whenever you come across a sentence can be divided into two parts, subject and predicate. And these subjects and predicates can further be divided into 8 parts of speech. ध्यान रखना, ये जो subject और predicate हैं, इनमें जितने words आते हैं, इन्हें हम further divide कर सकते हैं in 8 parts of speech. Okay? Now which are those 8 parts of speech that we are going to understand one by one. Okay? चलिए students आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले now let us try to understand the various parts of speech. So first is noun. Okay, now what is the meaning of a noun? It actually means name. I believe that school में आपने बहुत अच्छी तरह से रटा होगा name of any person, place or a thing, so that becomes a noun. Indeed, और noun को हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट संज्ञा। आई एम कीपिंग माई क्लासेस बाइलिंगुअल सो दैट कोई अगर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो वो भी अच्छी तरह से इसको समझ सके। Okay, so noun basically stands for name of any person, place or a thing, so that becomes a noun. Now there are many types of nouns. इन सब टाइप्स को अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल स्टूडेंट्स अपन इतना सा समझे व्हाट इज अ नाउन। अब कोई कॉमन नाउन होता है, ओके, कोई प्रॉपर नाउन होता है, कोई काउंटेबल होता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट होता है, कोई कॉन्क्रीट नाउन होता है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ नाउन्स पॉसिबल। कमिंग ऑन द सेकेंड वन, pronoun. Okay, now what is the meaning of a pronoun? Understand. Pronouns are the words which are used in place of nouns. Okay, so these are the words which are used in place of nouns. Okay, and the most common pronouns are he, she, okay, I, we, you. तो अब आप देखो स्टूडेंट्स, ये सब के सब क्या हैं? प्रोनाउंस है। ओके, इसके अलावा भी देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स। अगर मैं माइंड कहता हूँ तो इवन दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ प्रोनाउन। आस कहता हूँ तो इवन दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोनाउन।
तो एनीवे कुछ और एग्जांपल्स भी होते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस टुडे. एडजेक्टिव्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव? इसे हिंदी में स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं विशेषण. एंड दीज आर द वर्ड्स विच एक्चुअली शो द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी दिखाना, उसे स्पेसिफाई करना. So that becomes the job of an adjective. Okay, so these are the words which qualify a noun or a pronoun. Okay, do understand this. किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दिखाना, उसकी क्वालिटी दिखाना, that becomes the job of an adjective. Okay, then coming on students, what is a verb? Okay, verbs are basically of two types. One is the action verb and the second is the state verb. Okay, चलिए अब अच्छी तरह से समझना स्टार्ट करें. व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन वर्ब, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? ईटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग, टीचिंग, स्टडिंग. आप देखोगे स्टूडेंट्स इन सब में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है. प्लेइंग, स्विमिंग, इन सब को स्टूडेंट्स अपन कहते हैं एक्शन वर्ब्स. सेकेंड आता है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब का मतलब है वेयर देयर इज नो एक्शन बट एक्चुअली स्टिल द वर्ब इज देयर. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई से आई एम अनिल. ओके, व्हेन आई से आई एम अनिल. Now tell me students, in this sentence, is there any action taking place? क्या इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स कोई एक्शन है? Not at all. और इस पूरे सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा डिवाइड करूं, I become the subject here. Okay, and what is I? It actually becomes a pronoun. मैंने कहा था स्टूडेंट्स किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. So I become the subject here. And what is am? This is the verb here. And Anil is just complementing दिस सेंटेंस. अनिल इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो वर्ब है स्टूडेंट्स उसमें कोई एक्शन नहीं है. एंड व्हेन देयर इज नो एक्शन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग एनी ऑब्जेक्ट आल्सो. तो इफ यू थिंक दैट अनिल इज द ऑब्जेक्ट हियर, नॉट एट ऑल. इस पूरे सेंटेंस में स्टूडेंट समझना, अनिल इज नॉट द ऑब्जेक्ट. इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट. व्हाई इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट? बिकॉज ये सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, बस दैट्स इट. बेटा ऑब्जेक्ट तो वहां पर होता है जहां पर कुछ एक्शन हो, बट अगर कहीं पर कोई एक्शन ही नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग एनी ऑब्जेक्ट. तो व्हेन आई से आई एम अनिल, यू पीपल डू अंडरस्टैंड, ये जो एम है दैट एक्चुअली बिकम्स अ स्टेट वर्ब. ओके, दैट एक्चुअली बिकम्स अ स्टेट वर्ब बिकॉज व्हेन आई से आई एम अनिल, ये सिर्फ इतना सा दिखाता है कि मैं अनिल हूँ. अंडरस्टैंड? तो व्हेन आई से आई एम अनिल, ये सिर्फ इतना सा दिखाता है कि मैं अनिल हूँ. ओके, so it is just showing the state, there is no action here. Now possibly many of the students may be thinking that sir, am is a helping verb here, but now you people try to understand, am is not a helping verb here, but yes I do understand am कहीं पर helping verb भी हो सकता है. तो चलो एक और सेंटेंस लेते हैं और उससे अपन कंपेयर करते हैं. अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ I am running, now you take this sentence. When I say I am running, I become the subject here. Okay, running, it becomes the main verb here. Okay, and here students, ये जो am है, this actually becomes sorry, this actually becomes a helping verb. So now you people try to understand, किसी भी sentence में if there is a main verb, then students am becomes a helping verb. But अगर students मैं इस sentence को देखता हूँ, there is only one verb and that itself is am. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपन इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, अपन इसको क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, बिकॉज इट इज जस्ट शोइंग द स्टेट. आखिर मैं इतना डिस्कशन कर क्यों रहा हूँ? बिकॉज जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज स्टेट वर्ब, व्हाट इज एन एक्शन वर्ब, तब तक स्टूडेंट्स हम वर्ब्स को कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. और ये जो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है, ये सिर्फ एम नहीं होता, इज, वॉज, आर, वर, ये जितने भी टू बी वाले वर्ड्स हैं, टू बी वाले, जो एक्चुअली शो करते हैं कि व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द स्टेट. तो डू अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट अ स्टेट वर्ब, एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं स्टेट वर्ब्स के. और यही सारे वर्ब्स दे ऑल्सो बिकम हेल्पिंग वर्ब्स, बट दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. अगर किसी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब है, कोई दूसरा वर्ब है, तो दीज वर्ड्स they actually become helping verbs. But अगर किसी sentence में यही verbs हैं, तो in that case they will not be called as helping verb, but they will be called as state verb.
जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ऑल आर हियर, व्हेन आई से वी ऑल आर हियर, इज देयर एनी एक्शन हियर? नो. व्हेन आई से वी ऑल आर हियर, तो यहाँ पर जो आर है दैट इटसेल्फ बिकम्स द वर्ब एंड दैट विल बी नोन एज स्टेट वर्ब. ओके, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्स में ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैव सीन पिछले कुछ पेपर्स में एंड पिछले कुछ सालों से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं वेयर यू पीपल हैव टू नॉट ओनली फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच बट यू पीपल हैव टू अगेन फाइंड आउट इट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ विच पार्ट ऑफ स्पीच. मतलब आप देखो, मुझे सिर्फ ये नहीं बताना है कि ये वर्ब है या नहीं, मुझे ये भी बताना पड़ता है कई बार कि किस टाइप का वर्ब है. तो दैट इज द रीजन, और स्पेशली स्नैप में, CUET में ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं. ओके, चलिए. तो स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट अ वर्ब, मेजरली दो टाइप्स के होते हैं, एक्शन एंड स्टेट. एक्शन में कुछ ना कुछ काम होता है और स्टेट में स्टूडेंट्स हम सिर्फ सिचुएशन को दिखाते हैं. ओके, एज इट इज, तो इसे अपन कहते हैं स्टेट वर्ब. अभी तक हमने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब. चलिए, कमिंग ऑन द फिफ्थ वन, adverb. Okay, coming on the fifth one, adverb. Now, what is an adverb? Let us try to understand. Adverbs को अपन हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण. एंड जनरली स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि these are the words which actually show the quality of a verb. They actually show the quality of a verb. But do understand, this definition is half. Adverb का पूरा definition आप समझना. These are the words which show the quality of anything. These are the words which can show the quality of anything except a noun or a pronoun. तो स्टूडेंट समझना, एडवर्ब्स अपन किसको कहते हैं? जो किसी की भी क्वालिटी दिखा सकते हैं एक्सेप्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन. अगर वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी दिखाते हैं तो दे एक्चुअली बिकम एन एडजेक्टिव. बट नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी की भी क्वालिटी दिखाना, दैट बिकम्स द जॉब ऑफ एन एडवर्ब. So if I say adverb can show the quality of a verb, yes. Can an adverb show the quality of an adjective? Yes. Can it show the quality of another adverb? Yes. Okay. It can also show the quality of a conjunction. It can also show the quality of a preposition. It can also show the quality of the whole sentence. Understand? किसी पूरे sentence को qualify करना, even that becomes the job of an adverb. I'll take some examples to make you understand the basic difference between what is an adverb and what is an adjective. और सबसे पहले आप डेफिनेशन को लेकर बहुत क्लियर हो जाओ. मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ, हम लोग थियरी पोर्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया. सबसे पहले तो यू पीपल हैव टू फोकस ऑन डेफिनेशंस. डेफिनेशन को स्टूडेंट्स अपन जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके मीनिंग को समझो, तो उसके बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना विल बिकम वेरी मच पॉसिबल एंड द आंसर्स विल बी एक्यूरेट. तो एडवर्ब क्या होता है? These are the words which show the quality of anything except a noun or a pronoun. चलिए, let us take some examples. Okay, मैं इन सबको स्टूडेंट्स बिठा रहा हूँ. I'll be taking some examples, but I'll be discussing the difference between what is an adjective and adverb. You people will have to just find out. चलिए, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पे ले रहा हूँ. जैसे when I say I am smart. Okay, चलिए, come on, tell me students in this sentence. You people have to find out what is the part of speech of smart. Is it an adjective or an adverb? सिर्फ इतना सा बताना है. There are only two options, adjective and adverb. इन दोनों में से what is the part of speech of smart? Yes, come on. So when I say I am smart, okay. अच्छा, यहाँ पर am कौन सा verb है? Yes, helping verb या state verb? Yes, it becomes a state verb because there is only one verb. So am becomes a state verb. ये सिर्फ इतना सा बताता है कि मैं स्मार्ट हूँ. अंडरस्टैंड? तो आई बिकम्स द सब्जेक्ट, एम बिकम्स द स्टेट वर्ब. ओके, एंड व्हाट इज स्मार्ट? स्मार्ट इज एक्चुअली शोइंग द क्वालिटी ऑफ आई. मैं कैसा हूँ? स्मार्ट. इजंट इट? आई एम स्मार्ट. तो अब स्टूडेंट्स आप देखो, व्हेन आई से आई एम स्मार्ट, तो स्मार्ट इज शोइंग द क्वालिटी ऑफ आई. एंड आई इज अ प्रोनाउन. इजंट इट? आई इज अ प्रोनाउन. तो स्टूडेंट्स, किसी प्रोनाउन की क्वालिटी दिखाना, that becomes the job of an adjective. So therefore smart becomes an adjective. चलिए, अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ. अब अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी स्मार्ट. अब स्टूडेंट्स माय क्वेश्चन इज, यू पीपल विल हैव टू फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वेरी. तो वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? दिस यू विल हैव टू फाइंड आउट. यस, व्हाट इज दिस? तो वेरी एक्चुअली किसे क्वालिफाई कर रहा है? ओके, मैं स्मार्ट हूँ, बट द क्वेश्चन इज हाउ मच.
So very is actually showing the quality of smart. How much smart? Okay. So smart becomes an adjective and very is showing the quality of smart. So therefore students किसी adjective की quality दिखाना, okay, that becomes the job of an adverb. So do understand when I say very smart, very becomes an adverb because it is showing the quality of an adjective. I hope the point is clear. ओके आराम से इसको डाइजेस्ट करो, समझो. मैं 2-3 एग्जांपल्स और ले रहा हूँ. ओके एंड विल बी वेरी क्लियर अबाउट कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हेन आई से आई रन फास्ट, okay, I run fast. Now let us try to understand this sentence. So I becomes the subject here and it is a pronoun. What does run? Yes, it becomes a verb. Okay, what kind of verb? It actually becomes an action verb. Okay, running is an action. So when I say I run fast, so run becomes a verb. Now the big question is, you people will have to tell me what is the part of speech of fast. तो मेरा क्वेश्चन है कि फास्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा. यस, कम ऑन टेल मी स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब. अब सबसे पहले यू पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड इट इज क्वालिफाइंग विच वर्ड. आखिर ये किसकी विशेषता दिखा रहा है? इट इज शोइंग द क्वालिटी ऑफ विच वर्ड. तो व्हेन आई से आई रन फास्ट, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं दौड़ता हूँ. कैसे दौड़ता हूँ? आई रन, बट हाउ डू आई रन? यस, फास्ट. तो एक्चुअली फास्ट इज शोइंग द क्वालिटी ऑफ रनिंग. It is actually showing the quality of running. So that is the reason students, जब मैं कहता हूँ I run fast, so fast is qualifying the verb and किसी verb की विशेषता दिखाना, that becomes the job of an adverb, isn't it? Yes. अब students अगर मैं कहता हूँ I run too fast, I run too fast. Now understand, ये too किसे qualify कर रहा है? Yes, come on. So when I say I run fast, how much fast? Too fast. So actually टू इज शोइंग द क्वालिटी ऑफ फास्ट एंड फास्ट इज एन एडवर्ब और किसी एडवर्ब की विशेषता दिखाना, दैट ऑल्सो बिकम्स अ जॉब ऑफ एन एडवर्ब. सो दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स व्हेन आई से एडवर्ब को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी की भी क्वालिटी दिखाना, दैट एक्चुअली बिकम्स द जॉब ऑफ एन एडवर्ब. ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. इफ आई से द प्लेन is hovering exactly over my head. Okay, चलिए अब इस सेंटेंस को देखो स्टूडेंट्स. When I say the plane is hovering exactly over my head, now you people understand what is over. Okay, over is actually showing the position. Okay, and that is the reason over becomes a preposition. अभी थोड़ी सी देर में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज अ preposition, बट कम से कम यू पीपल शुड नो दिस. ओवर बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ अ preposition. So this becomes a preposition. Now you people try to understand when I say exactly over, तो ये किसे क्वालिफाई करता है? preposition को. And do understand किसी preposition की विशेषता दिखाना, even that becomes the job of an adverb. So even exactly becomes an adverb. और वैसे भी स्टूडेंट्स आप देखो, इन अ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस लास्ट में जब ly आता है तो दैट बिकम्स एन एडवर्ब, बट दैट डज नॉट मीन दैट हर बार अगर ly आता है तो दैट बिकम्स एन एडवर्ब. देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स वेयर लास्ट में ly आने के बाद भी पॉसिबली दैट मे नॉट बिकम एन एडवर्ब. होल्ड ऑन, अभी तो बहुत कुछ मैं बताऊंगा व्हेन आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस. अभी तो स्टूडेंट्स हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज एन एडजेक्टिव एंड व्हाट इज एन एडवर्ब. So here I summarize this discussion. An adjective is a word which shows the quality of a noun or a pronoun. An adverb, when I talk about, this is a word which may show the quality of anything except the noun or a pronoun. I guess the point is clear. और इस डिस्कशन को अच्छी तरह से समझ लेना स्टूडेंट्स. ओवर इज अ प्रपोजिशन एंड एग्जैक्टली ओवर को क्वालिफाई कर रहा है. ओके, चलिए तो हमने 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिस्कशन किया था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. अब कमिंग ऑन द 6th one, conjunction. Okay, now you people try to understand what is a conjunction. These are the words जिनका बेसिक काम होता है to join. Sorry, जिनका बेसिक काम होता है to join. They may join two words, two phrases, two clauses or two sentences.
तो स्टूडेंट्स कंजंक्शंस ये भी कई तरह के होते हैं. सबसे पहले तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. बट becomes an example of a conjunction. I was not well, but I cleared my exams. So when I say I was not well, but I cleared my exams, so this becomes an example of conjunction. There are two sentences given to us और इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? But. अब इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखो कितने सारे कंजंक्शंस होते हैं. बिकॉज okay, then you have therefore, thus, hence, notwithstanding, either or, neither nor, not only but also. ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शंस. ओके, तो कंजंक्शन का मेन काम क्या होता है? टू ज्वाइन. ओके, सिर्फ इतना सा ध्यान में रखेंगे फिलहाल. And then students, there comes a very very important part of speech which is known as preposition. अब स्टूडेंट्स आप देखो ये जो preposition है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है. इसके जो एरर्स होते हैं इसको आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल होता है. ये बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं. दीज आर वेरी स्मॉल वर्ड्स लाइक इन, ऑन, एट, विथ, बट यू पीपल डू अंडरस्टैंड. इनके एरर्स को आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल होता है. ओके, दीज क्वेश्चंस दे सीम टू बी वेरी सिंपल. नाउ सी फॉर एग्जांपल, when I say I'm sitting on the bench, okay, on the bench, so on becomes a preposition. When I say I'm sitting under the bench, even under becomes a preposition. When I say I'm sitting behind the bench, when I say I'm sitting beside the bench. अब आप देखो स्टूडेंट्स इन चारों सेंटेंसेस में एक ही वर्ड को मैंने चेंज किया, बट एक्चुअली योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द बेंच इट गेट्स चेंज्ड. तो ये जो पोजीशन बताने वाले वर्ड्स हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन्हें स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं preposition. If I ask a question, sir, when are you going to take the next class? And if I give the answer, okay, I'll take the next class at 7 o'clock. So when I say at the 7 o'clock, what does that? That becomes an example of a preposition. And preposition में स्टूडेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? किस वर्ड के साथ कौन सा preposition चलेगा, ये नॉलेज हमें होना चाहिए. ओके, कई बार हमें ये पता नहीं होता है and we often commit a mistake. जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स लेता हूँ. कभी भी स्टूडेंट्स हम लोग कॉम्प्लाई वर्ड को यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल कॉम्प्लाई, तो कॉम्प्लाई के साथ हमेशा विथ आता है. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लाई? टू ओबे, टू फॉलो. सो कॉम्प्लाई के साथ हमेशा विथ आता है. यू पीपल शुड रिमेंबर इट. अब मान लेते हैं किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लाई के साथ बाई आ गया, तो दैट बिकम्स एन एरर. ओके, अब स्टूडेंट्स अगर मैं अबाइड लेता हूँ, अबाइड, तो अबाइड के साथ हमेशा बाई आता है. अंडरस्टैंड. ओके, अबाइड बाई. Okay, so we people have to understand कि किसके साथ कौन सा preposition आता है. The questions are majorly based on that. I'll take one more example. जैसे the lock was opened dash a key. Now you people tell me, I'm giving you two options. One is with and one is by. So you have to tell me what is going to come here. The lock was opened with a key और बाय अ की. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओके, पॉसिबली कई सारे स्टूडेंट्स ने विद भी सोचा होगा, कुछ ने बाय भी सोचा होगा. दैट्स फाइन. आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. द लॉक वाज ओपन्ड डैश मी डैश अ की. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द लॉक वाज ओपन्ड, यस, द करेक्ट आंसर इज बाय मी एंड विद द की. So now you people try to understand the person who is doing the task, the person, the agent, उसके साथ हमेशा बाई आता है. and key becomes the instrument. Instrument के साथ अपन हमेशा with लेते हैं. So that is what I mean to say. इस तरह से we people have to figure out कि कहाँ पर कौन सा preposition आएगा. So if I take the first sentence, the lock was opened with the key, that becomes the correct answer. So in this manner, you people have to be very very punctual as far as prepositions are concerned. चलो एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ. सॉरी, I resemble to और with अमिताभ बच्चन. अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं कहता हूँ I resemble to अमिताभ बच्चन और with अमिताभ बच्चन, तो which is the correct answer? To or with? Yes, what is the answer? I resemble to अमिताभ बच्चन और with अमिताभ बच्चन. So what is the right answer? Resemble का मतलब होता है उसकी तरह दिखना, understand. So the correct answer is resemble to, resemble with. Now students, you'll be surprised to know the correct answer here is I resemble अमिताभ बच्चन. न to आएगा न with आएगा. तो resemble के साथ स्टूडेंट्स कोई preposition नहीं आता.
तो दिस इज समथिंग विच मेक्स दिस चैप्टर वेरी मच टिपिकल, और इसलिए स्टूडेंट्स इसके आंसर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। हमें सेपरेटली एक एक प्रेपोजिशन के यूसेज को समझना ही पड़ेगा। ओके, चलो एक एग्जांपल अपन और लेते हैं to make you understand the importance of this particular chapter। और स्टूडेंट्स, हमारा जो पूरा कोर्स होता है, जो भी बच्चे उन्हें ज्वाइन करते हैं, उन्हें तो हम लोग पूरे डिटेल से सब कुछ पढ़ाते हैं। प्रपोजिशन पर मेरे कम से कम 4-5 घंटों की क्लासेस होती है, वेर आई कीप डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिलहाल लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। आई एम लेट अप और डाउन विथ फीवर। ओके, आई एम लेट अप और डाउन विथ फीवर। चलिए मुझे बताओ स्टूडेंट, यहाँ पर अप आना चाहिए या डाउन? सो व्हाट इज गोइंग टू कम हियर? आई एम लेट अप विथ फीवर, आई एम लेट डाउन विथ फीवर। सो व्हाट इज द राइट आंसर? अगर फीवर की वजह से मैं नीचे लेटा हुआ हूँ तो व्हाट हैज टू बी यूज्ड हियर? पॉसिबली स्टूडेंट्स, अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो डेफिनेटली लेट डाउन सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर। आई गेस मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही सोचा होगा। बट ग्रामर में स्टूडेंट्स देयर इज अ थंब रूल। ओके, एंड द थंब रूल इज जो आंसर हमें ठीक लगता है, ओके, यस, जनरली दैट इज नॉट करेक्ट। तो यस, थंब रूल इज अगर हमको लगता है लेट डाउन इज द करेक्ट आंसर, तो बस उसी को छोड़ देना, अंडरस्टैंड। एनीवे, मैं बहुत लाइटर नोट पे इसको कह रहा हूँ, बट फिर भी जब आप पूरा ग्रामर पढ़ोगे तो यू विल एक्चुअली रियलाइज कि कई सारी जगह ये थंब रूल अप्लाई हो जाता है। तो आई एम लेट अप और डाउन विथ फीवर, द करेक्ट आंसर इज आई एम लेट अप। Now what is the reason here? The reason is, अगर आप ये सोचोगे स्टूडेंट्स लेट का मतलब लेटना और अप का मतलब ऊपर, in this manner if you think and give the answer, you will never be able to give the correct answer. You people will have to understand, ये जो laid up है ना, that itself becomes a phrase. Laid up itself becomes a phrase. And what is the meaning of laid up? Laid up का मतलब ही होता है बीमार होना, diseased होना. Okay, understand? So laid up itself means when you are sick, when you are ill, diseased होना. So that is the meaning of laid up. So hence the correct answer is laid up. And laid down तो students अपन वहाँ use करते हैं जब कोई surrender कर देता है. So when I say the terrorists in Kashmir, they laid down their weapons. So laid down, surrender करना. So students, ये जो 5-10 minutes का discussion था on preposition, this was with the purpose to make you understand how important this chapter is and how tough, complex and confusing this chapter can be, though the questions seem to be very very simple. चलिए अब स्टूडेंट्स जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज इंटरजेक्शन, द 8th पार्ट ऑफ स्पीच। आई गेस सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा। यस, व्हाट इज एन इंटरजेक्शन? तो इंटरजेक्शन जहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग अपनी इमोशंस, ओके, वी एक्चुअली एक्सप्रेस आवर इमोशंस ऑफ सरप्राइज, हैप्पीनेस, सैडनेस, व्हाटएवर, व्हेन आई से वाओ, दिस बिकम्स एन इंटरजेक्शन। एंड यू माइट हैव सीन, इसके साथ हम लोग हमेशा एक्सक्लेमेशन का सिंबल यूज करते हैं जनरली, ओके, नॉट ऑलवेज बट जनरली। तो वाओ, सो व्हेन आई से वाओ, दिस बिकम्स एन इंटरजेक्शन। ओके, हुर्रे, माय गुडनेस। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप सैड हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? एलर्स। ओके, सो दिस बिकम्स एन इंटरजेक्शन। तो व्हाट यू पीपल हैव टू डू इज, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन्हें अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले तो वी पीपल विल हैव टू डेवलप अ स्किल so that whichever sentence is given to us, whatever sentence is given to us, उनमें हर वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को स्टूडेंट्स मुझे समझ में आना चाहिए। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए, उसमें जितने वर्ड्स दे रखे हैं, प्लीज इंश्योर दैट हर वर्ड, एवरी वर्ड बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ स्पीच, मुझे सबसे पहले वो क्लासिफिकेशन समझ में आना चाहिए। देन इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉमन एरर्स, वी पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉमन एरर्स, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दोज कॉमन एरर्स, then you'll be more confident कि कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए where 4 sentences are given to us and our job is to find out which is the most correct sentence or which is the most incorrect sentence. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एरर्स को आइडेंटिफाई करना becomes easier. तो सबसे पहले you people will have to learn how to identify the parts of speech. Second, हमें एरर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो 8 parts of speech हैं, they actually become 8 chapters. Then students, ग्रामर के सिलेबस में और क्या आता है? टेंसेस, articles, direct and indirect speech, active and passive voice, and the last is models. तो स्टूडेंट्स, ये है पूरा सिलेबस जो ग्रामर में किसी भी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए डिटेल से। ओके, एनीवे, जिन बच्चों के एग्जाम्स बहुत पास में हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल उस पर फोकस करें। बट जिन बच्चों के पास पूरा टाइम है, यू पीपल कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन कोर्सेस एज वेल।
and very soon students we are going to launch complete dedicated online courses for CAT and the various other exams. तो एक अलग से application भी launch होने वाला है, and we are going to provide our live classes there, are so many videos there. Okay, तो कोई भी student अगर next year इन सब MBA entrance exams को देना चाहता है, तो you people can actually drop a comment, and I'll be sharing my number with you, and then students, you people can get in touch with us. Okay, चलिए students, अब after understanding the various parts of speech, now let us come to the questions. तो सबसे पहला question आपके सामने है, you people have to just tell me the noun form of do. तो do का noun form, और students हम do का noun form पता करें उसके पहले सबसे पहले तो मुझे बताओ कि do का part of speech क्या है. What is the part of speech of do? First tell me that. Yes, it becomes a verb. It becomes a verb. Done? चलिए अब मुझे बताओ students, what is the correct answer here? Students do understand. जिन बच्चों ने does, done, did ऐसा कुछ भी सोचा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो. आपको पता है स्टूडेंट्स जितने वर्ब्स होते हैं उसके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं. V1, V2, V3 एंड समटाइम्स वी ऑल्सो टेक V4 एंड V5. ओके, चलिए अपन देखते हैं स्टूडेंट्स. जैसे do. Now do becomes the first form. Okay, verb, the first form of the verb. Do का second form होता है did, the past tense form. Then students done. This becomes the third form जो हम generally perfect tense में use करते हैं. Yes, I have done it. I have done it. V4 that becomes the ing form, so it is doing. And V5, okay, जो कि अपन third person के साथ use करते हैं S वाला form. Does, he does. Try to understand. I do the task, he does the task. You do the task, he does the task. Okay. Anyway, students, बहुत सारी चीजें हैं, एक ही वीडियो में तो कवर नहीं होगा, पर स्टिल अगर आपको थोड़ा बहुत भी ग्रामर के बारे में पहले से पता है तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इजीली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो नाउ यू पीपल सी, ये जितनी भी वर्ड्स हैं ऑल दीज आर वर्ब्स, एंड व्हेन आई से ऑल दीज वर्ड्स आर वर्ब्स, इसका मतलब है does cannot be the answer here, done cannot be the answer here, did cannot be the answer here. The correct answer is deed. So deed, it's a noun. Okay, deed, किसी भी वर्क को स्टूडेंट्स अपन deed कहते हैं. Okay, so that becomes the noun here, and the correct answer is second option. I guess the point is clear. चलिए, coming on students, I bought a beautiful dress at the mall. So you people have to tell me what is the correct answer. Beautiful का part of speech बताना है. And this is a simple question. Yes, what is the part of speech of beautiful? Actually, students try to understand. English में जितनी भी words होते हैं, all these words they belong to one out of 8 categories. Okay, ये जो 8 parts of speech है, जितनी भी English के words हैं, they actually belong to one out of these 8 categories. And English में एक और problem क्या होती है? एक ही word के multiple forms होते हैं. Okay, एक ही word possibly कई बार वो verb हो जाता है, और उसी का कोई form noun होता है, उसी का कोई form पॉसिबली एडजेक्टिव होता है. तो प्रॉब्लम क्या है, एक ही वर्ड के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, तो वी शुड नो देम ऑल्सो. चलिए, कमिंग ऑन, आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल. So what is dress? Dress becomes a noun, absolutely, and this word is qualifying this dress, this noun. How is the dress? Beautiful. So beautiful students noun को qualify कर रहा है, and any word which shows the quality of a noun that becomes an adjective. So therefore the correct answer is second option, adjective. Okay, चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ स्टूडेंट्स. कैन यू पीपल टेल मी, okay, which is the noun form of beautiful? ब्यूटीफुल का स्टूडेंट्स नाउन फॉर्म क्या होगा? ओके, यस एनीवन कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग. तो ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म, इट एक्चुअली बिकम्स ब्यूटी. ओके, ब्यूटी बिकम्स द नाउन फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल. ओके, एंड इसका एडवर्ब क्या हो जाएगा? अगर मैं आगे ly लगा दूं, ब्यूटीफुली, राइट, ही डांसेस ब्यूटीफुली, सो दैट बिकम्स एन एडवर्ब. एंड ब्यूटी, ओके, beauty should be appreciated, so students beauty becomes a noun. Okay, चलिए, what is bought here? Yes, it becomes a verb. I bought, so it becomes V2, or it becomes V2 here. I bought. So I bought a beautiful dress at the mall. The mall, it also becomes a noun. The, it becomes an article. Okay, it becomes an article.
कितने आर्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स? 3 होते हैं ना, ए एंड द। ए एंड, इन्हें स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, एंड द इज नोन एज definite article. And what is at? At actually becomes a preposition. So what I'm doing, इस पूरे सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड को स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ठीक है क्वालिफाई किया, हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया दैट अ पर्टिकुलर वर्ड बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ स्पीच. सो दिस इज समथिंग विच यू पीपल हैव टू कीप डूइंग. अगर ये कला हमने डेवलप कर ली एंड इफ यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हर वर्ड बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ स्पीच, आप देखोगे स्टूडेंट्स 50% ग्रामर का काम यहीं पर खत्म हो जाएगा. चलिए, कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, question number 3. I left my shoes under the kitchen table. Now you people have to tell me ultimately under. What is under? So when I say I left my shoes under the kitchen table, you people have to tell us what is the part of speech of under. So yes, what is the right answer? Yes, under shows the position. So therefore, students, the correct answer is it is a preposition. Absolutely. Okay, come on, tell me what is left. Yes, it becomes the verb. V2, leave, left. Okay, and then students shoes, it becomes noun. And what is my? What is my? Possibly कई सारे students बोलेंगे sir my is a pronoun, but do understand students, my is not a pronoun here. It is actually an adjective because ये shoes को qualify कर रहा है. So when I say my shoes, the question is whose shoes? किसके शूज़ की बात हो रही है? तो व्हेन आई से माय शूज़, तो यस ये शूज़ की विशेषता दिखा रहा है, उसे स्पेसिफाई कर रहा है, तो इट एक्चुअली बिकम्स एन एडजेक्टिव. और अगर मैं इसको फर्दर क्लासिफाई करूं तो इट एक्चुअली बिकम्स अ पॉजेसिव एडजेक्टिव. ओके, यू अंडरस्टैंड. आई लेफ्ट माय शूज़ अंडर द किचन टेबल. नाउ व्हाट इज टेबल? इट बिकम्स अ नाउन. एंड व्हाट इज किचन हियर? वैसे तो स्टूडेंट्स किचन भी एक नाउन हो सकता है, बट हियर when I say kitchen table, it is actually specifying the table. और table को specify करना, that becomes the job of an adjective. So here students, kitchen becomes an adjective. Okay? चलिए, wonderful students, ऐसे बहुत सारे questions और हैं. Okay, I have got 10 questions for today's class, but students, I will have to end the class here. तो ये जो बचे हुए questions हैं हम लोग अगले वीडियो में इसको पोस्ट करेंगे, और अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसको और डिस्कस करेंगे. तो टिल नाउ जितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा और पूरा देखा है, आई बिलीव दैट अभी तक आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा. व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके, व्हाट इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ ग्रामर, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग दैट अ गिवन वर्ड बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ स्पीच. तो पूरा फोकस अपन इस पर करें, एंड नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टेक फर्दर क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफाइंग द पार्ट ऑफ स्पीच. तो पहले सबसे ज़्यादा फोकस करो केवल ऑन आइडेंटिफिकेशन rather than finding out the errors. Okay, so thank you very much for watching. आज का थोड़ा सा पोर्शन रह गया, उसे अपन आगे कवर करेंगे. So thank you for watching. अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, and if you can post some comments also, जो भी आप और हमें शेयर करना चाहते हैं तो please keep sharing. So thank you very much and all the best. See you very soon.